Hello viewers, hope you are safe and healthy. Viewers, you are already familiar with the moving of mouse on the mouse pad. In this video, we will learn about the part of mouse, action of mouse, features of mouse. Let's start the video. This is Sonia Khanna and you are watching Learn with Motivation. Student, as you know that mouse is a part of computer. It is an input device. A device which used to input the data is called input device. The mouse is an input device. It is also called a pointing device. We use mouse to point the thing on the monitor. That is why it is called pointing device. It has two buttons. Left hand side left button and right hand side is right button. It has one wheel that is called scroll wheel. It is small in size. It has a wire which is just like a real rat tail to be attached with CPU. Student, as you know, we sit on the chair. Same like that, the mouse pad on which we move the mouse is known as mouse pad. आप ये जो देख रहे हो ना black color का, that is mouse pad. A pad on which we move the mouse is known as mouse pad. आपको हमेशा माउस पैड यूज करना चाहिए माउस की सेफ्टी के लिए. You can see a slanting arrow on the monitor. The slant arrow on the screen is shown the mouse movement is known as mouse pointer. There are many types of mouse, but in this video you will know about only two types of mouse. There are two main types of mouse. That is optical mouse and wireless mouse. Optical mouse, a long tail which is called wire, but wireless mouse does not have any wire. Okay, it work without wire. आप यहाँ देख रहे हो छोटा सा USB पड़ा हुआ है, इसको मॉनिटर CPU में लगाते हैं एंड देन ये जो माउस है वो सेल से वर्क करता है. ठीक है, it work like a remote. So just revise. There are two type of mouse. First is optical mouse, which is also called wired mouse, and second is wireless mouse. Got the point? Wireless यानी कि without wire mouse. Functions of mouse. You can say the action of mouse कि mouse किस तरह से काम करता है. There are many type of functions. First is clicking. You can do clicking with mouse. You can do double clicking with mouse. You can do right click with mouse. Scrolling, pointing, dragging and dropping. अब one by one हम इसके बारे में समझते हैं. Let's start. What is clicking? When we press the left mouse button, there are two. आपके left hand side में देखो left mouse button. When we press the left mouse button once and release it, that makes a click sound. This is called clicking. जब आप माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करते हो ना तो उसमें से साउंड आता है क्लिक, इसीलिए इसे कहते हैं क्लिकिंग. ओके, तो आपको मैक्सिमम जब भी माउस यूज करना है आपको लेफ्ट क्लिक ही यूज करनी है. डबल क्लिक. Press the
left mouse button twice. Twice मतलब डबल मतलब दो बार. Without stopping and releasing is called double click. लगातार करना है, ठीक है, तो रुकना नहीं है. तो जब आप लगातार दो बार माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे तो दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक. राइट क्लिक. अभी तक हम कौन सा माउस का बटन प्रेस कर रहे थे? लेफ्ट वाला. जब हम राइट बटन को प्रेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड राइट क्लिक. जब भी आपको कुछ स्पेशल ओपन करना है, फाइल ओपन करना है, फोल्डर ओपन करना है, या उसमें कोई स्पेशल टास्क करने हैं, डिलीट करना, कुछ भी करना है, तो हम राइट बटन को यूज करते हैं, ठीक है. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट माउस बटन वंस will show a list of command on the monitor that is called right click. You can see a wheel at the middle of the mouse. माउस के बीच में देखो आपको ये जो दिख रहा है that is called scroll. To roll the wheel up and down to see the text below the file. आप इसको जब मूव करते हो तो क्या होता है, आपका पेज अप या डाउन जाता है. दैट इज कॉल्ड स्क्रोलिंग और इसको हम स्क्रोल व्हील बोलते हैं, ठीक है. पॉइंटिंग. नॉर्मली आप क्या करते हो, आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है आप मम्मी को कहते हैं पॉइंट करके फिंगर्स से. सेम लाइक दैट जब आप अपने मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे किसी भी फाइल, फोल्डर या कमांड पर अपने इस कर्सर को, स्लैंटिंग पॉइंटर को लेकर जाते हो तो आप पॉइंट कर रहे हो. तो इसीलिए इसे कहते हैं पॉइंटिंग और इसी वजह से माउस का नाम भी पॉइंटिंग डिवाइस पड़ा है, ठीक है. व्हेन वी पॉइंट अ थिंग in desktop or a computer, that is called pointing. Dragging and dropping. Drag and drop का मतलब होता है पकड़ के खींचना और छोड़ देना. To move an item by holding the left mouse button is known as dragging, and to release the button where the item is to be placed is known as dropping. You can see on the picture कि इस साइड से फाइल को उठा के दूसरी साइड लेके गए, ठीक है. रेड वाले को पिक किया और दूसरी जगह ड्रॉप कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप. आप इसे देखो मूव भी कर सकते हो पेज को इधर उधर, ओके. एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज यूज माउस पैड, क्योंकि माउस पैड से आपका माउस स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है. कीप योर माउस ऑलवेज ऑन माउस पैड for smooth movement. Hope you understand all the topic very clearly. Solved exercise link given in the description box. You can go there and do the exercise. And don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.